and welcome to News at this hour. I'm your host Rika Roy and this is our top story. Now, IT Minister Rajeev Chandrasekhar has dismissed concerns that have been raised over the alleged draconian nature of a new fact-checking unit to tackle misinformation related to the government. He says it will be done in a credible way, but there are fears that this will be used to censor news. In a controversial move, the government has from today given itself the right to decide what is fake or false or misinformation in any news or content about the government. It is setting up a fact-check unit with no outsiders because it says it's government information. After releasing the IT rules, the Electronics and IT Ministry is now preparing to notify a fact-checking unit which will be a government body, and it will function as a watchdog to check the veracity and authenticity of all information related with Government of India on the internet. However, the IT Ministry says there will be transparency, but the move is to protect what they call attempted foreign attacks on Indian democracy. एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है कि देश के इंटरनेट सेफ और ट्रस्टेड हो और जो बाहर के देश, बाहर के तत्व, बाहर के वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे इंटरनेट में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालते हैं और हमारे डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम एक मुंह तोड़ जवाब दे और उसके लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट नोटिफाई होगा सरकार के इंफॉर्मेशन और डेटा को फैक्ट चेक करने के लिए. The government's new rules allow the government to determine what content is false, fake or misinformation. The intermediaries will have to take this down. If they don't, they can face action in court. Intermediaries risk losing their safe harbor immunity. The Internet Freedom Foundation says intermediaries means firms like Meta or Twitter or internet service providers like ACT or Airtel or Jio. The Editors Guild of India says that they hit out at center's fact-check rules, that there is adverse implications for press freedom and that fake news and that government has given itself absolute power. The Editors Guild of India added that it is disturbed by sweeping powers to मेटी. विशेष प्रकार से फोकस किया गया है कि जितने भी ये पब्लिशर्स हैं, डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो कोई ऐसी चीज प्रकाशित नहीं करेंगे जो झूठ है, फेक न्यूज है. हालांकि हम समझते हैं कि फेक न्यूज बहुत एक विकराल सा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, लेकिन इसको इफेक्टिवली डील करने के लिए आइडियल बात तो ये होगी कि अगर हमारे पास एक डेडिकेटेड कानून हो. While the Internet Freedom Foundation says that it is a chilling effect on fundamental right to speech and a gross violation of Supreme Court order for blocking content, the government says the responsibility of social media platforms will increase. उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाएगा. उनके प्लेटफॉर्म से गलत चीज 100 टाइम्स मोर वायरल होते हैं और सही चीज ज्यादा वायरल नहीं होते हैं. In New Delhi with Himanshu Shekhar Mishra, Usama Shah for NDTV. Now, Mallikarjun Kharge is leading the alliance talks for 2024 polls. He has called up DMK President, Tamil Nadu Chief Minister for alliance and seat sharing in Tamil Nadu. Kharge has also called Uddhav Thackeray for alliance and seat sharing in Maharashtra. Sources have told NDTV that Congress is keen on cementing alliances at state-to-state level. Prime Minister Narendra Modi is on a two-day visit to Telangana, Tamil Nadu and Karnataka from Saturday. There will be a major thrust on infrastructure and connectivity push in the southern states as they go for critical assembly polls, followed by the big 2024 battle. Less than 3 months after the first Vande Bharat from Telangana Secunderabad to Andhra Pradesh Visakhapatnam on January 15th Sankranti, the Prime Minister will flag off a second Vande Bharat connecting the IT city with Tirupati, a pilgrim mecca for Hindus. That is expected to cut travel time by almost 3.5 hours. Also to be announced is modernization of Secunderabad railway station at a cost of 720 crores, 13 multimodal services, doubling and electrification of lines to make urban-suburban travel faster. Even as the BRS government has been accusing the centre of neglecting Telangana, the Prime Minister will announce 11,300 crore worth of projects, including the foundation stone of AIIMS at BB Nagar and national highways to boost road connectivity and socio-economic development. At Chennai, a state-of-the-art new integrated terminal building,
of Chennai International Airport, built at a cost of 1260 crore rupees and reflecting Tamil culture, will be opened. This will increase passenger serving capacity from 23 million passengers per annum to 30 million passengers per annum. The PM will also flag off another Vande Bharat between Chennai and Coimbatore and then participate in celebrations commemorating 125 years of Sri Ramakrishna Mutt in Chennai. Uma Sudhir, NDTV. The BJP says Bandi Sanjay was targeted for arrest as he was exposing the BRS and KCR government on their alleged inability to protect the interests of students and youth. The municipal corporator turned MP turned state party chief has declared that he and his party would work single-handedly to oust the KCR family. Telangana BJP chief Bandi Sanjay walked out of Karimnagar jail on Friday morning to a hero's welcome. The high drama around his arrest and calls from central leaders, including Mr. Amit Shah and JP Nadda, has elevated his profile and enthused him to intensify his attack on the KCR family. పేపర్ లీక్ అవడం వలన 30 లక్షల మంది యువత మొత్తం బర్బాదైపోయింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కొడుకే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఆయన రాజీనామా చేసి భారతీయ జనతా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చూడ డైవర్ట్ చేసి కుట్రలు చేస్తే మాకు జైలు కొత్త కాదు, ఈ కేసులేం కొత్త కాదు, తప్పకుండా ఫైట్ చేస్తాం. Bandi Sanjay is accused of trying to defame the KCR government, disrupt peace, create law and order issues, leading to cancellation of 10th class exams by exploiting a WhatsApp forward he got of a 10th class Hindi exam question paper on Tuesday while the exam was still in progress. The Telugu exam paper was also similarly shared among others on WhatsApp on Monday. चोरों को पकड़ के जेल में डालने के बाद आज कुछ पेपर लीक नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सीधा साफ एग्जाम चल गया। तेलंगाना सरकार के कोई प्रूफ्स नहीं बताने के कारण प्राइमा फेसी के अंदर जो संजय जी जो कोई भी उनके खिलाफ प्रूफ नहीं बताने के कारण वही कोर्ट उनको बेल देना पड़ा. BJP MLA Itala Rajendra, who also got a forward of the question paper and in whose native Kamlapur the paper leak happened, has also been summoned by the police. In the last 3 weeks, the BRS government has faced the heat of protests, accusing the government of failing the 30 lakh youth aspiring for jobs with the leak of the Telangana State Public Service Commission recruitment exam papers. Jobs are an emotional issue for the youth of Telangana as they have been waiting now for years for the Telangana State Public Service Commission recruitment exams. Both the BRS and the BJP have been accusing each other of having a direct role in the leak of the papers. The exchanges between KT Ramarao and Bandi Sanjay have been particularly sharp and unlikely to die down in the days to come. In Hyderabad, with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV. Amid rising cases of coronavirus, Union Health Minister Mansukh Mandavia today held a review meeting and advised states to stay alert and be prepared for COVID-19 management. In the meeting with state health ministers and principal as well as additional chief secretaries held virtually, Mandavia stressed on identifying emergency hotspots by monitoring trends. He also urged the state health ministers to conduct mock drills of all hospital infrastructure on the 10th and 11th of April. Now, there has been a surge in coronavirus cases in Delhi in the last 24 hours. New cases have crossed 700. The positivity rate is close to 20% again. 733 new cases have been reported in the last 24 hours, which means the positivity rate in Delhi is 19.93%. 2 patients have died in the last 24 hours as well. Switching tracks to some other news now, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan strongly condemned the dropping of certain chapters and portions from NCERT textbooks and alleged that complete saffronization of academic books was the objective behind the motive. He says excluding certain portions and chapters from the textbooks with a political motive was not only a negation of history but also a condemnable move.
Salman Khan is the latest from Bollywood to bat for some form of censorship on OTT platforms. Just days after INB Minister Anurag Thakur said that the ministry has been getting a number of complaints about the obscenity and abusive language on the OTT platforms. Now, Thakur had said that complaints have started increasing in the last few days and the department is taking it very seriously. If there is a need to make a change, the government is willing to consider it. क्रिएटिविटी के नाम पे हम कुछ भी ओटीटी पर नहीं परोस सकते, ये भी हमें इंश्योर करना है, क्योंकि अभी तो प्लेटफॉर्म्स बड़े होने शुरू हुए हैं, अभी तो करोड़ों लोग इससे और जुड़ने वाले हैं. So I think this is the time that industry where we have self-regulation, we should also look at these details, because India is a diverse country and OTT must also reflect the collective conscience of the country, and our creative minds, our creative economy should benefit out of that. I just think that there should be a censor on OTT, and all this, vulgarity, nudity, gali galoch should, stop, because अब सबके पास ये सब फोन पर आ गया है. चलो 15 साल का 16 साल का बच्चा देख ले, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी छोटी सी बेटी देखे पढ़ने के बहाने में? तो आई जस्ट थिंक दैट जो कंटेंट शुड बी चेक्ड ऑन OTT, एंड जितना क्लीन होगा कंटेंट उतना बेहतर होगा. Welcome back. Now, in an exclusive interview with NDTV's Editor-in-Chief Sanjay Pugalia, NCP Chief Sharad Pawar opens up on a host of issues, including the opposition's demand for a JPC despite a Supreme Court-ordered probe and the parliamentary deadlock that led to a washout of the budget session. Listen in. एक विदेशी शॉर्ट सेलर बाजार में पैसा कमाने के लिए एक रिपोर्ट लेकर के आता है और इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर सवाल खड़ा करता है, और उसको हम देश का सबसे बड़ा मुद्दा मान लेते हैं, बिना ये देखे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर उसका क्या असर पड़ता है. एक मांग रखी थी, मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच या जेपीसी की जांच. सुप्रीम कोर्ट की जांच अब हो रही है, फिर जेपीसी का क्या तुक है? बात ऐसी कि जो आपने कहा, कोई एक विदेशी फर्म या इंडिविजुअल उन्होंने कुछ बयान दे दिया, इस बयान से देश में हंगामा हो गया. ऐसे बयान इससे पहले भी कुछ लोगों ने दिए थे, कुछ दिन हाउस में हंगामा भी हुआ था, मगर इस समय आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया. और ये इश्यूज जो रखे गए, वो रखने वाले कौन है, इसकी सोचने की आवश्यकता थी. हमने तो कभी नाम भी सुना नहीं था जिसने स्टेटमेंट दे दिया. नंबर 2, इसकी बैकग्राउंड क्या है. नंबर 3, जो कुछ इशूज रेज करते हैं और इससे देश में हंगामा होते हैं, तो इसकी कीमत देश की ओवरऑल सिचुएशन, इकोनॉमिक, इसको कितनी देनी पड़ती है, ये बातें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. यहाँ टारगेट किया गया इसे लगता है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का अनाउंस करने के बाद जेपीसी इसका इन्फॉर्मेशन रहा नहीं, इसकी आवश्यकता रही नहीं. आपने सर बहुत गहराई से समझाया कि जेपीसी किस तरह के विषयों के लिए उपयुक्त है, कहाँ उपयुक्त नहीं है. फिर कांग्रेस पार्टी भी जानती है पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत, फिर जेपीसी की जो पीछे पड़ी है उसके पीछे इरादा क्या है? इरादा क्या था मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे सुप्रीम कोर्ट की जज ने अपॉइंट की हुई कमेटी वही इन्फॉर्मेशन थी, ये मालूम है. इसमें जेपीसी ठीक है, शायद डिस्कशन करना होगा. जेपीसी की एक बात होती है कि जेपीसी शुरू होती है तो हर दिन जेपीसी में क्या हुआ वो मीडिया में आता है. ये इशू और कोई 2-4 महीने 4 महीने चलाने की बात किसी के मन में होगी तो वह कर सकते थे, मगर इसमें सच्चाई बाहर आने के लिए फायदा नहीं हो सकता.
आपने सर बहुत गहराई से समझाया कि जेपीसी किस तरह के विषयों के लिए उपयुक्त है, कहां उपयुक्त नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी भी जानती है पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत, फिर जेपीसी की जो पीछे पड़ी है उसके पीछे इरादा क्या है? इरादा क्या था मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे सुप्रीम कोर्ट की जज ने अपॉइंट की हुई कमेटी वही इम्पोर्टेंट थी, ये मालूम है। इसमें जेपीसी ठीक है, शायद डिस्कशन करना होगा। जेपीसी की एक बात होती है कि जेपीसी शुरू होती है तो हर दिन जेपीसी में क्या हुआ वो मीडिया में आता है, ये इशू, और कोई 2-4 महीने 4 महीने चलाने की बात किसी के मन में होगी तो वह कर सकते थे, मगर इसमें सच्चाई बाहर आने के लिए फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या होता है सर, चुनाव के पहले विपक्ष को ये लगना स्वाभाविक है कि कोई सनसनीखेज मुद्दा उठा लें और रूलिंग पार्टी पर एग्रेसिव हो जाएं तो उसका हमको चुनाव में फायदा हो जाएगा। एक राय ये है, बहुत लोगों की राय है और बहुत लोगों से बातचीत के आधार पर मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो है चुनावी निरर्थकता का मुद्दा है। आप महाराष्ट्र को बनाने वाले लोगों में से हैं, मॉडर्नाइजेशन और बिजनेस और उद्योजक जो हैं उनका काम है देश के विकास को आगे बढ़ाना। ऐसे में जो कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने रिफॉर्म को लीड किया, जब वो इतना एंटी बिजनेस, एंटी एंटरप्रेन्योर माहौल खड़ा करती है, ये सर घोर आपत्तिजनक है या नहीं? मैं एंटी बिजनेस ऐसी बात हो रही थी, इसका स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ अटैक करना हो तो अदानी अंबानी ये नाम सामने आ गया। सवाल ये है कि जिनके ऊपर आप अटैक करते हैं उन्होंने अधिकार का गैर इस्तेमाल किया, गलत काम किया, तो डेमोक्रेसी में इनके खिलाफ बोलने का अधिकार 100% है, मगर विदाउट नोइंग फुल एनीथिंग हमला करना मैं समझ नहीं सकता। अगर कोई अपोजिशन यूनिटी नाम की चिड़िया कहीं उड़ेगी तो उसके चीफ आर्किटेक्ट आप ही होंगे। अभी ये यूनिटी हो गई पार्लियामेंट वगैरह की, अपोजिशन यूनिटी एक सपना ही है, बात करते रहते हैं हम लोग। ऐसे नहीं, अपोजिशन यूनिटी की आवश्यकता है, नहीं ऐसे नहीं कहूँगा, मगर इश्यूज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है कि देश के जो अपोजिशन है इसमें अलग अलग सोच है, अलग अलग थिंकिंग है। हमारे जैसे लोग हो, हम अपोजिशन यूनिटी चाहते हैं, मगर हमारा ट्रस्ट डेवलपमेंट पर है। अपोजिशन यूनिटी में हमारे दूसरे भी कुछ साथी हैं, वो भी चाहते हैं अपोजिशन यूनिटी हो, मगर उनके मन में जो एक लेफ्टी थिंकिंग कई सालों से रहा है, इससे वो दूर जाने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन यूनिटी विथ स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये होगी तो कामयाब होगी, मगर प्रोग्राम और डायरेक्शन ये नहीं होगी तो ये अपोजिशन यूनिटी देश के लिए लाभदायक नहीं होगी। Now, reacting to the interview, the Congress said that even though NCP may differ, there are 19 opposition parties that are convinced that the Hindenburg-Adani issue is a very serious one. NCP is part of the 20 opposition parties united in saving the constitution and defeating the BJP's destructive, divisive agenda, is what the Congress had to say.